So doctor, there are so many queries that come to us, primarily when there is no compatible donor available in the family. How do you manage that? I think this is one of the most common scenario that we come across, and the lack of a compatible donor was probably one of the most common reason to turn down a donor. But now with the advent of technology, it is possible to do a transplant across blood group also, and we call it as ABO incompatible liver transplant. There's a process and medications through which we decrease the load of the antibody against the opposite blood group. So it is called plasma exchanges. Patient has to undergo little plasma exchanges so that the antibodies that react with the other blood group go down. And when they are at their very acceptable limit, then the transplant is performed. And because of the medicines that we give, the antibody levels after that remains at the low level permanently, and therefore the chances of rejection are very less. So body can accept an organ which is not from its own blood group also. And the success rate is slightly less than the conventional one, but it is still more than 90%, which is pretty acceptable in liver transplant per se. So this increases the donor pool to a much larger extent. Now there is no need to wait for a compatible donor if there is none. So what are the latest advancements that have happened over the years, primarily in liver transplant surgeries? There have been many, but there are two most common that are for the public benefit that I would be talking about. One is the advent of minimally invasive approach in liver transplant. When we talk of minimally invasive approach, it means whole surgery can be done through 2-3 small holes. Conventionally, the complete big large incision used to be put over the abdomen, and nowadays it is possible to do the surgery through 2 or 3 small holes. So this decreases the long-term morbidity, especially of the donor and of course of the patient, but patient surgery is still largely done through open incision. Okay. So if I talk about living donor liver transplant, for the donors it is a big boon when the surgery can be done without putting any big incision over the upper part of the body. So long-term quality of life is good, aesthetics is good, body disfigurement is not there. So donor satisfaction level is much higher. So अभी तक हम यही सुनते थे, जो ज़्यादा शराब पीता है उसका लिवर खराब हो जाता है, बट अब ये भी सुनने में आ रहा है जो नहीं पीता उसके भी लिवर खराब हो रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। काफ़ी लोग आते हैं कि साहब हम तो कभी दारू नहीं पिया लेकिन लीवर कैसे ख़राब हो गया। सो आजकल आप देखिए सबकी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, रहने का तरीका है, खाने पीने का जो तरीका है वो काफ़ी डिस्टॉर्ट हुआ है ओवर द ईयर्स। बाज़ार का खाना बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ स्टाइल का पार्ट बन गया है। बच्चों का खाना का लाइफ स्टाइल बाज़ार का पिज़्ज़ा बर्गर और रिफाइंड फूड ज़्यादा हो गए। ये जितने भी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, रिफाइंड फूड हो गए हैं इस तरीके की, ये डायरेक्टली लीवर पे असर करते हैं और एक डिजीज़ करवाते हैं जिसको हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। यानी कि इनसे जो खाना जो बॉडी के अंदर जाता है वो लीवर के ऊपर चर्बी को जमा करता है और लीवर की फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लगता है और इस लेवल तक करने लगता है कि लीवर अपना काम लगभग ना कर पाए। और जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीरियस ग्रेड की हो जाती है तो लीवर फेलियर भी कर सकती है। तो जरूरी नहीं कि आप शराब ही पीते हैं, अगर आपकी लाइफ स्टाइल ऐसी है जिसकी वजह से आपके लीवर के अंदर चर्बी जमा हो रही है, चाहे वो लेक ऑफ एक्सरसाइज हो या इस तरीके के रिफाइंड और अनफ्राइड और इस तरीके के खाने पीने की वजह से हो, तो भी लीवर डैमेज हो सकता है और उस एक्सटेंट तक हो सकता है कि लिवर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता आ जाए। So doctor, what are the symptoms of liver failure? Liver actually performs more than 200 functions in the body. When the liver fails, all those functions are affected. And the most common symptoms that appear are accumulation of fluid in the tummy and bleeding from mouth or nose because blood gets thinned out. There is portal hypertension, and portal hypertension is the pressure in the veins of the abdomen get increased, and these veins get ruptured and cause bleeding, which can come out through the mouth. So these are the two most common symptoms that a patient who is going into liver failure develops. The third most common symptom after this is going into hepatic coma, or which we technically call as hepatic encephalopathy. So when anything happens that a liver failure is progressing, patient is having
accumulation of fluid in the tummy or bleeding, then those patients can go into hepatic coma also. So if you ask me practically, these are the three most common symptoms of a liver failure patient. So doctor, what exactly is non-alcoholic fatty liver disease? NFLD is the biggest growing epidemic of today. In common language, we called it as a fatty liver disease, and it is practically due to the lifestyle and the kind of eating habits that are being distorted nowadays. So because of the fried food and lack of exercise and all these things that we have, the liver gets overburdened with the kind of the food that is being served to the body, and that liver usually gets damaged, and that is called as non-alcoholic fatty liver. So primarily with the bad eating habits, yes, you are getting fatty liver, and it goes in the same stage, grade 1, grade 2. Yes. If unchecked, it can go into severe stages and can lead to stage of liver failure also. So doctor, what is the life expectancy after a liver transplant? It's a very relevant question. Usually after a successful liver transplant, patient can live his normal life, what it is programmed in his body. So basically, if I may say, liver transplant was evolved for pediatric age groups. So when you say anything which is evolved for pediatric age group, when a transplant is done, disease is completely cured and patient can live his normal life that is programmed in his biological genetic makeup. So actually, when we talk about 1 year success, 3 year success, 5 year success. So usually, whatever complications of transplant has to come, they usually come in 1 to 3 years of time. Okay. So any person who has actually crossed that limit is thought to be cured of whatever liver disease, and he can live a normal biological life that is programmed in his genetic. Still, they have to maintain a good lifestyle, manage with the medicines and all those things. They will have to take proper medicines, they have to maintain their proper lifestyle, and they will live as if they are free of liver disease after a successful liver transplant. So being a transplant surgeon, which transplant is more successful comparing kidney and liver? Definitely liver, because kidney transplant usually has a shelf life about 5 to 10 years, because the transplanted kidney usually gets burdened with the native disease and it gets damaged over a period of time, but liver usually doesn't. There are some causes which can damage the liver, but majority of liver diseases, they do well after a liver transplant. And patient is completely cured of those diseases after a successful transplant, provided he takes proper precaution, medication after the transplant. So is it possible that one liver can save 2 lives? Yes, definitely. When we talk of this, we talk about cadaveric liver. So cadaveric liver is a full liver which usually patient donate when the patient is on a deathbed and the family wishes to donate the part of the organs of that person, of their relative. So that liver can be divided into 2 parts. One part can be donated to an adult and the smaller part can be donated to a pediatric age group. So one liver can actually save 2 lives at the same time. तो हम जनरली यही सुनते हैं, जिसको ट्रांसप्लांट चाहिए हमें एक ऑर्गन चाहिए और दूसरी बॉडी में हम ट्रांसप्लांट करते हैं, स्पेशली किडनी में. तो सबके मन में यही बात आती है कि लिवर भी देना होगा, तो जैसे किडनी दी जाती है मुझे अपना लिवर दे देना और मैं तो मर जाऊंगा या मेरी जान पे बनाएगी. क्या सच्चाई है इसके अंदर? नहीं, देखिए, जिस तरीके से बॉडी में सभी जानते हैं कि 2 किडनी होती है. सो एक किडनी को आराम से निकाल के किसी को डोनेट कर दिया जाता है तो बची कोई किडनी हाइपरट्रॉफी होकर बॉडी का फंक्शन कर लेती है. लेकिन जब लीवर की बात आती है तो लीवर सबकी बॉडी में एक ही होता है. तो इसीलिए धारणा है कि अगर मेरे पास एक ही लीवर है तो मैंने अगर लीवर दे दिया तो मैं कैसे सर्वाइव करूँगा. सर्जिकल टेक्निक्स की वजह से और कुदरत की एक मिरेकल की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है. लीवर को भगवान ने, कुदरत ने ऐसी क्षमता दी है कि अगर लीवर का कुछ टुकड़ा अगर काट के अलग कर दिया जाए, कुछ ही हफ्तों में बचा कुचा पार्ट ग्रो कर जाता है ओवर टाइम. इसको लीवर की रीजनरेशन कैपेसिटी कहते हैं. ये यूनिक कैपेसिटी लीवर को कुदरत ने प्रदान की है और इसी वजह से लीवर ट्रांसप्लांट लिविंग डोनर के थ्रू हो पा रहा है. यानी कि डोनर का अगर हम लीवर का एक हिस्सा निकाल लेते हैं और पेशेंट के अंदर लगा देते हैं तो जो बचा कुचा लीवर डोनर में है वो ग्रो करके पूरा बन जाता है 2 से 3 हफ्ते में, और सेम लीवर का टुकड़ा पेशेंट के अंदर भी ग्रो करके पूरे लीवर का काम कर लेता है. यानी कि जो लीवर जिसने डोनेट किया है उसे कोई लॉन्ग टर्म लीवर देने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और
पेशेंट जिसको लीवर मिला है उसकी पूरी जिंदगी वो ऑपरेशन बदल देता है, उसकी जान को बचाया जा सकता है। तो लिवर देने वाले की जान को खतरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से ट्रांसप्लांट होता है आज 100% सेफ्टी डोनर के लिए अपनाई जाती है और डोनर का ऑपरेशन बहुत सेफ हो गया है। आजकल तो डोनर का ऑपरेशन हम बगैर चीरा दिए भी कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपिक या रोबोटिक टेक्निक से, जिसके अंदर बिल्कुल अपर बॉडी के अंदर चीरा नहीं दिया जाता है। लीवर का जो हिस्सा है जो निकलना होता है बॉडी से बाहर, वो भी एक छोटे से इंसिजन को जो कि बॉडी के निचले हिस्से में दिया जाता है और विजिबिलिटी से बहुत दूर होता है, उसके थ्रू निकाला जा सकता है।